सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे तमाम नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में फैमिली प्लानिंग के सफ़ीर शहजाद रॉय ने भी शिरकत की। शहजाद रॉय बतौर फैमिली प्लानिंग एम्बेसडर अपनी कारकर्दगी कॉन्फ्रेंस में शरीक पॉलिसी में क़ज़ और अदलिया के सामने रख रहे थे। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। As well as the province of 𝐏𝐻𝐵, very progressive legislation has also come into the field. So we have laws as well as policies. Now, the first step that needs to be taken is for the proponents, the protagonists of the decisions that have been taken or the recommendations that have been made today to approach the respective governments for enforcing those. And supposing that enforcement is not forthcoming, that's when you go and approach the high courts. That's where the courts come in. Because the courts cannot make laws, they cannot make policies, but they can issue directions for enforcing laws as well as policies. So right here, I'm not the High Court, but I know how judges feel. I have judges of the High Court sitting right in front of me, judges of the district judiciary sitting right in front of me. We would all support the enforcement of laws. So remember that the way forward is for you to take the first step, and if nothing happens, if the government is reluctant, then the courts can be called in aid. This would be in enforcement of the fundamental right of women to life, to health, to education, to employment. They all stem, livelihood stems from the right to life. Health stems from the right to life. Education is an independent right. But higher education maybe is not a fundamental right, but it can be connected with the right to life. So the first observation as a judge that I make to you is that there is a window which you have opened in the last 2 days, and the window is to the enforcement of laws as well as policies of the government that promote the population management that we've all spoken about. Ultimately, all these recommendations that have been made and have been announced today, they promote the welfare of the society. It's all in public interest. I congratulate the extraordinary learning, expertise, and devotion of the speakers who came on stage and shared their thoughts with us. The participation by members of the judiciary, members of the bar, members of the public at large is deeply appreciated also for sparing time on a weekend, and from places far away in Balochistan, 𝐏𝐻𝐵, Sindh, Gilgit-Baltistan, and even Kashmir to join us in these deliberations. All of us take back messages to our manzils, to our destinations. And those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them the freedom of choice in employment, in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families, the decisions are mutual decisions. But to become healthy partners in the family, healthy decision makers in the family. And all this would lead to a better society, a progressive society, and inshallah, an economically vibrant society.
About manzil, there's an ayat from the Holy Quran. You must be thinking that why does this gentleman either start with or conclude with the Holy Quran? But there is this beautiful ayat from the Holy Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi anzalni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. O my sustainer, cause me to reach a destination blessed by thee. For thou art the best to show man how to reach his true destination. Let the destination selected by the Almighty for mankind, the best destination for mankind in this world, be chosen for us and for this society to progress, develop in terms of enlightenment, in terms of skills, in terms of production, in contribution to if you look at our preamble in the Constitution, we have a role to play even in the international world. That is one of the aspirations that our society has. I hope that the Almighty takes us to the beautiful destination, Munzilan Mubarakan. And I wish you all, as you go home, to Mubarak Manzils, so that we can get down to work with a positive mind and a happy heart. Ultimately, if you remember, I started my conversation with you yesterday as expressing the hope for a happy family. So let's go back to happy families, happy thoughts, and happy times. God bless you all. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त चीफ जस्टिस खिताब कर रहे थे। आपको ये बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ने खिताब में कहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में बासलाहियत ख़वातीन का गलबा था। उन्होंने कहा कि आबादी से मुतालिक मेरे आधे तहफ़्फ़ुज़ात तो इसी बात से हल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत और माशरे के अंदर आला ओहदों पर बासलाहियत ख़वातीन मौजूद हैं। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल का पाक फौज से इज़हार एकजहती पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई, रैली भी निकाली। तकरीब में मुकर्रीन ने रियासत और पाक फ़ौज के साथ हिमायत का इयादा किया। मुतालबा किया कि 9 मई के मुजरिमों और सहूलतकारों को जल्द अज जल्द सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई नज़रियाती हदों को छूने की जुर्रत न कर सके। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुनफरिद रैली निकाली गई जिसमें शाही रिक्शों पर सवार मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। रैली लिस्बन के टाइम्स स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हुई। वेलकम बैक। मार्गला हिल्स की ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज़्यादती की तहकीकात जारी हैं। थाना क़ोहसार पुलिस ने कहा है कि मुतासरा खातून पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रही। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे जियोन्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मार्गला ट्रेल नंबर 3 के बाहर और ये वही ट्रैक है जहां पे कोसार थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था खातून की मुद्दईयत में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ रेप हुआ है। ताहम आज इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो मुद्दईया हैं वो पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रही और इसके अलावा जो है वो जगह का तयन भी अभी तक नहीं हुआ और मुतलका जो लड़का जिसका उन्होंने FIR में जिक्र किया है उसके कवाइफ भी वो नहीं बता रही। ताहम दूसरी तरफ पुलिस इसी प्रेस रिलीज में ये दावा भी कर रही है कि जो तहकीक है उसमें पेशरफ भी हो रही है और दुरुस्त समत में आगे जा रही है, जबकि इस वकूए की जगह से लातलकी का ऐलान किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज भेजा गया है उसमें ये दावा किया गया है कि यहाँ पर जो है पुलिस का गश्त होता है इन ट्रेल्स के ऊपर और ड्रोन के साथ भी इसकी निगरानी की जाती है। ताहम यहाँ पर रेगुलर जो विजिटर हैं यहाँ के वो इस बात की तरदीद करते हैं कि यहाँ पर बाकायदगी से कोई पुलिस की तैनाती नहीं होती और ना ही कभी ड्रोन देखे गए हैं जिनसे इन ट्रैक्स की जो सर्विलेंस का जो दावा है पुलिस का वो किसी हवाले से दुरुस्त साबित हो। इसके अलावा इन ट्रैक्स के ऊपर शाम के औकात में अलावा जिसमें बिला मुबालगा दर्जनों अफराद आते हैं, उसके अलावा दिन के औकात में इक्का दुक्का वाक़यात यहाँ से लोगों से स्नैचिंग के भी जो हैं वो हो चुके हैं और यहाँ पर उतनी सिक्योरिटी मौजूद नहीं है जितना इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दावा किया गया है। जी।